More revelations in the IAS Pooja Khedkar case. The IAS trainee had allegedly claimed to be visually impaired in her affidavit to the Union Public Service Commission for the Civil Services exam. But Khedkar made no mention of disability when she sought admission in medical college before that. उन्होंने NT3 कैटेगरी में एडमिशन लिया था, बिलोंगिंग टू वंजारी कम्युनिटी। तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। अभी जब वो यूपीएससी अपीयर कर रही है तब उसे मेंटल इलनेस हो या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके पास उसका कुछ उस वक्त का मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट अवेलेबल है जिसमें ऐसे कुछ उसका जिक्र किया हुआ है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता है, उसका है अपने पास। और उसमें डिसेबिलिटी कोई इसी फाइल में है? हाँ है। ओके। और उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई नहीं है, इसके लिए सेपरेट सर्टिफिकेट लगता है, वो नहीं है हमारे पास। एंड एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटीज लिखा है उसमें। Trouble is now mounting for Pooja's family as well. The Khedkars are now caught in another controversy over a land dispute. The Pune police claim Pooja's parents are on the run and have switched off their mobile phones. Police teams are searching for the couple in Pune and nearby areas. 3 teams have been formed to trace them, but so far the whereabouts of Dilip Khedkar and Manorama Khedkar remain unknown. उनके खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। वो सिलसिले में हम उनको ढूंढ रहे हैं। उनके पास वो क्राइम के अगेंस्ट इंक्वायरी करना है और यहाँ आए हैं तो लॉक है उनका घर और उनके मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ लग रहा है। The situation escalated for the Khedkars after a video showing Pooja's mother Manorama Khedkar threatening a farmer with a firearm went viral. The farmer alleged that the Khedkars had encroached his land and hired goons to beat him up. Newly launched FIR says that section 504, 506 criminal intimidation has already been added in the newly FIR, but now interestingly traffic police department has seized the Audi with the beacon. Secondly, Pune CP has issued notice to Manorama Khedkar under the violation of Arms Act. The police have also seized an Audi car used by Pooja Khedkar. The vehicle was found with a red and blue beacon, a VIP number plate and Maharashtra government written on it, all in violation of the Motor Vehicles Act and what Pooja Khedkar is entitled to as an IAS officer trainee. Pooja is silent on the allegations against her and her family. जो भी जांच कमेटी है उनके सामने I will keep all my things. As the search for Manorama and her husband continues, the controversy surrounding the Khedkar family escalates. A government panel is already investigating whether Pooja Khedkar got a disability certificate and non-creamy layer OBC certificate in violation of norms to get selected into the IAS. The whole saga has exposed serious issues of power misuse.